Hello everybody. A very good morning to all of you. In the last lecture we started electromagnetic induction and we discussed regarding magnetic flux density and their units. Magnetic flux phi is equal to B dot A, dot product of magnetic flux density and the area enclosed. The unit of magnetic flux is Weber and that of magnetic flux density it is Weber per meter square. Also we discussed 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss and 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell, where Maxwell is a smaller unit of magnetic flux and Gauss is a smaller unit of magnetic flux density. We also discussed electromagnetic induction, the phenomena of inducing EMF in a circuit when magnetic flux linked with its changes is known as electromagnetic induction. We are having two laws, Faraday's laws of electromagnetism. First is whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit or coil, an induced EMF is produced and it lasts only so long the magnetic flux is changing. And second law is the magnitude of this induced EMF produced, E is equal to minus d phi upon dt for a single turn of the coil. And if you are having n number of turns in the coil, then the induced EMF E is equal to minus n into d phi upon dt. Minus sign shows that induced EMF produced is such that it opposes the very cause of its production. This is also known as Lange's law. So negative sign indicate the direction of the induced EMF produced and it is opposite to the already current flowing in the circuit, as per the case may be. If there is a increase in magnetic flux, the induced EMF will be in such a direction that it try to maintain the change, that is it will produce an inverse current. And if the magnetic flux is decreasing, then induced EMF produced will be in such a way that it will try to maintain the change, that is the current produced will be in the direct direction as already current flowing in the circuit. So the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the very cause responsible for its production. इसके बाद हमने किया था टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि Q इज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर. तो टोटल चार्ज फ्लोइंग इन ए सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. It only depends upon the change in magnetic flux and the resistance of the circuit. Or lastly we did self-induction and choke coil. Self-induction is the property of a circuit when any change in the current linked with the circuit induces an inverse current in the circuit. This is known as self-induction, by virtue of which energy is stored as a magnetic field of the circuit. Then we discussed choke coil. What is choke coil? A solenoid having large number of turns wounded on a iron core so as to have large inductance is termed as choke coil. And we derived the relation for the self-inductance of a long solenoid, that is
phi is equal to L into I. Phi magnetic flux linked with the solenoid is directly proportional to the current flowing in the solenoid. So phi is proportional to I, or phi is equal to L into I, where L is known as the coefficient of self-inductance. If I is equal to 1 ampere, then phi is equal to L. So we can define the coefficient of self-inductance is equal to the magnetic flux linked with the circuit when a unit current flows through it. And unit of self-inductance is Henry. Then today we will start with the next topic, which is non-inductive coils. Non-inductive coils. In bridge circuit, this self-inductance is a drawback. When we are to measure the resistance, then due to this self-inductance effect, a reverse current is introduced in the circuit, which reduces the current conditions in the circuit, and we are not able to record the exact resistance of the circuit. So in bridge circuits, self-inductance is a drawback when resistance is to be measured. To minimize the effect of self-inductance in resistance coils, the coils are wound so as to set up extremely small magnetic fields. In this case, the wire is doubly wounded on itself before being coiled up. Such a coil is said to be non-inductive. Each turn is in close contact with the second turn, carrying current in the opposite direction. The magnetic effect is in this way cancels out or neutralized. Thus, the resultant magnetic flux and the inductance are negligibly small. In this case, the self induction effect is almost neutralized. कैसे? अगर आपके पास कोई वायर है और सिंगल वायर के दोनों सिरों को पकड़ लें और एंड यू स्टार्ट कॉइलिंग अप, एक के ऊपर एक आप उसको लपेटते जाएं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपकी ये वायर है तो ये इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे चलती जाएगी, तो करंट आपकी सेम ही है, लेकिन जब आपने इसको कॉइल अप कर दिया तो एक सिरे में ये क्लॉकवाइज जा रही है और दूसरे में ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, क्योंकि ये एक के ऊपर एक वायर है,
एक ही वायर में दो सेम करंट फ्लो कर रही है, लेकिन क्योंकि आपने उसको एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया है तो वो सिंगल डायरेक्शन जो ऑफ करंट है इट बिकम्स अपोजिट टू ईच अदर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जिसके कारण जो रिड्यूस करंट इसके कारण होगी रिवर्स डायरेक्शन में, और जो दूसरी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी दूसरी टर्न में इसके कारण, वो दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो जो नेट इफेक्ट होगा इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। तो जो सेल्फ इंडक्शन के कारण आपकी रिवर्स करंट प्रोड्यूस होनी थी इट विल बी रिड्यूस टू ए वेरी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आपने सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही थी उसको आपने कंट्रोल कर लिया। जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस बॉक्स होते हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें इस तरीके से यहाँ लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस निकालते जाते हैं, और इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस वायर लगी हुई है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। इसके आगे फिर एक और वायर लगी हुई है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है। और ऐसे ही आगे ये सीरीज में ऐसे ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये अप टू 5 ओम तक आपको अलग अलग ये कॉइल्स मिलेंगी अलग अलग रेजिस्टेंस की। तो जैसे आपने यहाँ पे 2 की लगाई इस पे ऊपर, तो इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो आपका सर्किट में आ गया। एक आपका न्यूट्रल पॉइंट है जिस इसमें 1 ओम और 2 ओम के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 ओम रेजिस्टेंस इस वाला और 2 ओम वाला रेजिस्टेंस इसका 1 + 2 3 ओम जो है आपका सर्किट में आ गया। जैसे आपने ये 2 ओम की निकाल दी तो ओनली 1 ओम इज इन दी सर्किट। जहाँ से ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो यहाँ से सेकंड एंड पॉइंट से आप जो रिफिनिटी पॉइंट है वहाँ पर अगर आप जोड़ते रहोगे तो सर्किट में उतना रेजिस्टेंस आपका इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे जो कॉइल लगी हुई है वो जो है वो नॉन इंडक्टिव कॉइल है, जिसको हमने सिंगल वायर को एक के ऊपर एक लिपटा हुआ है, जिसके कारण जब हम इसको टच करते हैं तो जो चेंज आती है करंट में वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये अपने आप ही नीचे इस चेंज को न्यूट्रलाइज कर देती है। करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होके अपने आप को नलीफाई कर लेती है, और आपको वही एग्जैक्ट वैल्यू 1 ओम की मिलती है जो आप चाहते हैं कि सर्किट में इंट्रोड्यूस हो। तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है ये इसी तरीके से काम करता है। क्लियर? तो इसी को जो नॉन इंडक्टिव कॉइल जो है हम उसी में इनको यूज़ करते हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस कॉइल्स होती हैं उसमें ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की जाती है। इसके बाद था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। इस बात को समझ में आ गया आपके या नहीं? जिसको इस तरीके से देखें जैसे आपकी एक ही वायर है और हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, और यहाँ से भी करंट ऐसे जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब यही टर्न इसके ऊपर ओवरलैप हो गई, तो आपको एक दिशा करंट की ये वाली मिल रही है और इसके कारण जो मिल रही है वो उल्टी मिल रही है। तो ये दोनों जो एक ही वायर को इस तरीके से अपने ऊपर लपेटने के कारण आपका जो नेट इफेक्ट होगा वो जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी इट विल नलीफाई ईच अदर। तो यही सिर्फ एक ट्रिक है जिससे कि हम सेल्फ इंडक्टेंस को नलीफाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू जब आपने निकालनी है पर्टिकुलर वैल्यू की वो वेरी ना करे। नहीं तो होगा क्या, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो नेगेटिव जो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी इन अपोजिट डायरेक्शन वो करंट कंडीशन चेंज करेगी, और अगर आपने यहाँ 1 ओम लिखा हुआ है रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वो 1 ओम ना होके इट विल बी लेसर, क्योंकि करंट की वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली आपकी वेरी कर जाएगी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड।
ये कोई हमारी सॉलिनॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I फ्लो कर रही है और जिसकी लेंथ जो है L है, और जो परमेबिलिटी है वो म्यू है। तो उस केस में सपोज देयर इज ए सॉलिनॉइड of length L, number of turns N, area of cross section A, current flowing I and permeability mu. Field inside the coil H is equal to Ni upon L. Field inside the coil H is equal to Ni upon L. Therefore, magnetic flux through each turn, magnetic flux through each turn Y will be equal to mu H A, or it is equal to phi is equal to mu H A, or it is equal to mu N I A upon L. If there are n turns in the solenoid, then total magnetic flux H is equal to Ni upon L. Total magnetic flux linked with the solenoid of n turns, having n turns, phi n will be equal to mu n I A upon L into n. So it will be equal to mu n square I A upon L. Say this is equation number 2. Also, we know that magnetic flux phi linked with a solenoid carrying current I, phi is equal to L into I. So the total flux linked with the coil phi is equal to L into I. So this 1 and 2, comparing 1 and 2, this is also total flux. So comparing 2 and 3, this one and this one, you will be having L is equal to mu n square A upon L. I will cancel out. So it is equal to mu n square A upon L. So self-inductance of a long solenoid having n turns is equal to mu n square A upon L. Also, we know that, what we know, mu is equal to mu naught into mu r, where mu naught is the permeability of the free space and mu r is the relative permeability of the medium with respect to space. For air and vacuum, mu r is equal to 1. Therefore, L will be equal to mu naught n square A upon L, and value of mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter or Weber per ampere meter. So if we are having a number of codes of relative permeabilities mu r1, mu r2, mu r3 and area, cross section area A1, A2, A3, in that case L will be equal to mu naught n square upon L into
म्यू R1 A1 प्लस म्यू R2 A2 प्लस सो ऑन अप टू म्यू RN AN, जितने भी आपकी नंबर ऑफ कोर्स होंगी उसके हिसाब से। हेनरी। So in this way we can find the self-inductance of a long solenoid having n turns through which current I is flowing of length L and area of cross section A in a medium of permeability mu will be equal to mu naught n square L into mu R1 A1 plus mu R2 A2 plus mu RN AN हेनरी। तो कैसे किया हमने? ये आपकी कोई सॉलिनॉइड है परिनालिका जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है और जो करंट फ्लो हो रही है वो I है और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है और जो मीडियम ऑफ परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू जो है वो म्यू है। उस केस में जब करंट फ्लो करेगी इसमें जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी H, वो that will be equal to n into I upon L, number of turns into current flowing I upon length of the solenoid, n I upon L। ये आपकी H की वैल्यू आ गई। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है इट इज़ इक्वल टू म्यू इंटू H इंटू A। तो उस वैल्यू को पुट करके यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए सिंगल टर्न। और अगर इसमें n टर्न्स हैं तो उसके लिए आपने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया, कितना हुआ? दैट विल बी इक्वल टू म्यू n स्क्वायर I इंटू A अपॉन L। और इससे पहले हमने एक आर्टिकल ड्राइव किया था जिसमें हमने कहा था कि किसी भी सर्किट के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। तो वहाँ से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने L की वैल्यू निकाली। तो L की वैल्यू आपकी आ गई म्यू इंटू एन स्क्वायर A अपॉन L। और हमें ये भी पता है कि जो म्यू के साथ ये भी रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर फॉर एयर एंड वैक्यूम। जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो 1 होती है, उसको पुट किया इसमें, देन एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलिनॉइड। एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर और वेबर पर एम्पियर, और दिस वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। एंड फाइनली इफ वी आर हैविंग ए नंबर ऑफ कोर्स, यहाँ तो सिर्फ हमने एक एयर ही कोर है, अगर हमारी कोई कोर आयरन की भी है और उसके साथ कोई और भी कोर है तो जितनी कोर्स होगी उसके हिसाब से अगर उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू R1 म्यू R2 म्यू R3 और कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज A1 A2 A3 है, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा इस सॉलिनॉइड के लिए इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L इंटू म्यू R1 A1 प्लस म्यू R2 A2 प्लस सो ऑन। क्लियर? हेनरी। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। Energy stored in an inductor। इंडक्टर और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर? So the basic difference between these two is inductor's resistance is non-ohmic. Inductor's resistance is non-ohmic। क्या मतलब उसका? It doesn't obey Ohm's law। Ohm's law क्या है? B is equal to IR। तो इंडक्टर के केस में it is not obeyed। और ऐसे ही जो रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज ओमिक।
which means it obeys Ohm's law. यही फर्क है दोनों में, इंडक्टर में और रजिस्टर में. इसमें एनर्जी स्टोर होती है आपके इंडक्टर में इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन रेजिस्टेंस में इट इज ए हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. So energy stored in an inductor. Consider an electric circuit consisting of an inductance through which current I is flowing. When the circuit is closed, the back EMF opposes the growth of the current in the circuit. Current flows against the back EMF. इसको इस तरीके से समझें, जैसे यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई हुई है और यहाँ पे एक स्विच है और सडनली हमने स्विच को प्रेस किया, योर सर्किट इज क्लोज्ड. तो ऐसे क्लोज होने के कारण इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा होगी जो इस चेंज को होने के लिए रोकेगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, EMF प्रोड्यूस्ड E विल बी इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी. और इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी अपोजिट टू दी करंट फ्लोइंग ऑलरेडी इन द सर्किट ड्यू टू दिस बैटरी EMF. तो इसके कारण जैसे ही आपने इसको प्रेस किया यहाँ से, तो इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट विच अपोजेस द चेंज. और जब ये करंट विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी इंड्यूस्ड करंट की, इट विल बिकम जीरो. When the current reaches its maximum value, there is no back EMF and thus no extra work is done. The total work done is stored in the magnetic field of the coil. When current is switched off, this energy is liberated and an induced EMF that tries to maintain the current is produced. If the induced EMF developed is large, sparking takes place at the switches. और अगर एक स्विच है तो एक ही होगा, दो है तो मल्टीपल स्विचेस. Suppose the current through the coil at the time of growth is increasing at the rate of di upon dt amperes per second. Therefore, back EMF E is equal to this one L into back EMF E is equal to L into di upon dt. Therefore, work done in time dt, dw will be equal to E dt, it will be equal to L into di upon dt into t. Work done in small time dt will be equal to L into di upon dt into E into I into T is the formula. Energy E into I into T, उसी का यूज करते हुए dw is equal to L into dt into I into dt, और it is equal to L into I into di. So the small work done in time dt will be equal to L into I into di. Question number 1. Total work done when current increases from 0 to its maximum value I naught will be equal to, W will be equal to integral between limits 0 to I naught Li di. L is constant, I di, so it will be equal to Li naught square by 2. Therefore,
Energy stored, total work done when current reaches its maximum value I naught is equal to L I naught square upon 2, 1 by 2 L I naught square. This work will be stored as the magnetic field of the inductor. Now, special case, if I is equal to 1 ampere, then if I naught maximum value of the is equal to 1 I naught is equal to 1 ampere, then W will be equal to 2 times the, then L will be equal to 2 times the work done in reaching the current from 0 to its maximum value. So, we can again define the coefficient of self inductance as it is equal to the, it is numerically equal to the twice of the work done in establishing magnetic induction accompanying unit current in the circuit. So, this work done will be stored as the energy of the conductor in the form of magnetic field. W will be equal to 1 by 2 L I naught square. So, next topic is mutual induction. So, these are two magnetic circuits A and B. The current I is linked with the circuit A. When the current linked with the circuit A changes and induced EMF or current is produced in the second coil or in the second circuit, the phenomena of generating induced current in the second circuit when the magnetic flux linked with the first changes is known as mutual induction. अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, इसकी में करंट चेंज करेगी तो उसके कारण इंड्यूस करंट जो है वो इसमें प्रोड्यूस होगी. तो when you change the current linked with the circuit B and induced current will again generate in the neighboring circuit A, and this phenomena of generating EMF in this circuit by changing current in one circuit is known as mutual induction. Consider two coils A and B adjacent to each other. When a current in the circuit A changes, there is a change in the magnetic flux linked with it, and an EMF is induced in the circuit B. This phenomena is called mutual induction, and the pair of circuits
which show this property are called coupling circuits. And they are said to have mutual inductance between them. If there is any change in the current in circuit B, then EMF is induced in the circuit A. This shows that mutual inductance is truly mutual. Such circuits are said to be coupled circuits. Moreover, the magnetic flux linked with the circuit B depends upon the current I flowing in the circuit A. Therefore, magnetic flux phi is directly proportional to I, current flowing in the circuit A, or phi is equal to M into I, where M is known as coefficient of mutual induction, where M is known as coefficient of mutual induction. Again, differentiating this equation, you will be having d phi upon dt will be equal to M into di upon dt, and we also know that E is equal to minus d phi upon dt. Therefore, E will be equal to minus M into di upon dt. Now, if di upon dt is equal to 1 ampere per second, then numerical value of E is equal to M. So, we can again define the coefficient of mutual inductance is equal to induced EMF produced in the second coil when the current changes at the rate of 1 ampere per second in the first coil. और जो यूनिट होंगे इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के, दे विल बी हेनरी. यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी. एक बार फिर से देखें, हमारे पास ये दो सर्किट हैं, कपल्ड सर्किट, सर्किट ए एंड सर्किट बी एडजेसेंट, पास है. अगर करंट आई इसमें साथ जो लिंक्ड है वो चेंज होती है, तो उसकी चेंज होने के कारण सर्किट बी में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है. तो ये तब तक प्रोड्यूस होती रहती है जब तक ये करंट आपकी चेंज हो रही है. ठीक है. जो फिनोमिना है, व्हेन वी प्रोड्यूस ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल व्हाइल चेंजिंग द करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके. तो जो हमारा ये जो करंट चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है इस कॉइल के साथ में, कौन सी कॉइल, ए वाली, वो डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग आई इन दिस सर्किट आई. देयरफॉर फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई. एम इज ए कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. और इसको अगर आपकी आई की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, उस केस में दिस एम विल बी इक्वल टू 5. यू कैन डिफाइन coefficient of mutual inductance is equal to the magnetic flux linked with the first coil when a unit current flows through it. और अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, d phi upon dt will be equal to m into di upon dt. so हमें पता है E is equal to minus d phi upon dt होता है. उसी को यूज करते हुए E will be equal to minus m into di upon dt. और अगर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हम मान लें कि 1 एम्पियर पर सेकंड है, उस केस में द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड सर्किट विल बी इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सर्किट्स. तो इस तरीके से आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हो बाय टू वेज. फर्स्ट बाय दिस मेथड, इसके हिसाब से, और दूसरा आप इसके हिसाब से. अभी आपने पहले पढ़ी सेल्फ इंडक्शन, अब हमने पढ़ी म्यूचुअल इंडक्शन. दोनों में फर्क क्या है? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल सर्किट
हमारे पास एक ही सर्किट है जिसमें करंट चेंज होती है, तो उसके चेंज होने के कारण एक इंड्यूस करंट पैदा होती है जो इस चेंज को होने से रोकने की कोशिश करती है। ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इट इज सेल्फ इंडक्शन। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू सर्किट्स। ये हमारे पास दो सर्किट्स हैं, इसमें चेंज हो रही है, उस चेंज होने के कारण ईएमएफ जो है वो दूसरे में प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू सर्किट्स, whereas सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल सर्किट। जो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसकी फिजिकल यूटिलिटी क्या है सेल्फ इंडक्शन की? जैसे चोक कॉयल है, जो पुरानी ट्यूब्स थी, इनिशियल करंट हाई टू जनरेट इनिशियल हाई करंट, वही जहाँ भी हमें ये चाहिए हो गए, उसमें वहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन यूज करते हैं। जैसे स्टार्टर्स होते हैं आपके जो वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, उसमें इनिशियली वी नीड हाई करंट, तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको हम एम्प्लॉय करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, जहाँ पे आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है वोल्टेज को, वहाँ पे वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो इस जो ट्रांसफार्मर है, उसमें आप सिर्फ एसी को ही लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो, डीसी को नहीं, क्योंकि डीसी में कोई फेज आपका चेंज नहीं होता। whereas एसी चेंजेस 50 टाइम्स 50 साइकिल्स पर सेकेंड, जो उसकी आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो रिड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में। तो जो वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस in case of transformer, and we use the property of self induction in case of choke coil or starters of motors, जो water lifting systems, centrifugal pumps. Clear? Okay. इसके बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलिनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस of two long solenoids. ये हमारी दो सॉलिडॉइड्स हैं, ए एंड बी, जिसको हमने ए को हमने डिनोट किया है प्राइमरी टर्न से पीपी, और जो बी हमारी सॉलिडॉइड है उसको हमने डिनोट किया हुआ है एसएस सेकेंडरी। सो दिस इज योर टू सॉलिनॉइड्स। तो जो आपकी प्राइमरी है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स N1 है
और जो सेकेंडरी है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N2 है. So consider two coaxial mean having same axis solenoids A and B. A is the primary solenoid and B is the secondary solenoid. It is assumed that there is no leakage of magnetic flux, ideal condition, which is not possible. Let number of turns in the primary solenoid, number of turns in primary solenoid is equal to N1. Similarly, number of turns in secondary solenoid is equal to N2. Length of the primary coil is equal to L. Current flowing through the secondary is equal to I. Magnetic field at any point inside will be equal to mu naught N I upon L, where mu naught is the probability of free space. We have taken that there is the core of both the solenoid is of air. So in that case mu r is equal to 1. So mu is equal to mu naught. Therefore magnetic field inside the coil will be equal to mu naught N I upon L. Magnetic flux through each turn of the secondary will be equal to magnetic flux through each turn of the secondary will be equal to phi is equal to BA. So it will be equal to field inside is mu naught N I upon L. Therefore magnetic flux linked with the secondary will be equal to mu naught N I A upon L. Mu naught here N is N1. इस कॉइल के कारण जो चेंज होगी it will be mu naught N1 I A upon L. This is also mu naught N1 I upon L. Total magnetic flux through N2 turns of the secondary, total magnetic flux through N2 turns of the secondary will be equal to mu naught N1 into N2 into I into A upon L. Also we know that total magnetic flux phi T is equal to M into I. Say this is equation number 1, this is equation number 1, this is 2 and this is equation number 3. So from 2 and 3 M will be equal to mu naught N1
N2 into A, I cancels out upon L. Therefore, coefficient of mutual induction between the two solenoids A and B will be equal to mu naught N1 N2 into A upon L, where N1 is the number of coils in the primary solenoid, N2 is the number of turns in the secondary coil, and L is the length of the primary coil. Therefore, M is equal to mu naught N1 into N2 into A upon L. For air core, and unit will be Henry. Now, if the core is not of air, it consists of other materials also, iron, copper, or something like that. In that case, if the relative permeability of those medium is mu R1, mu R2, mu R3 respectively, and corresponding cross sectional area is is A1, A2, A3, in that case M will be equal to mu naught into N1 N2 upon L into mu R1 A1 plus mu R2 A2 plus so on up to mu Rn An Henry. So this is the expression for the mutual inductance between the two solenoids having turns N1 and N2. N1 is the primary turns in the primary solenoid and N2 is the turns in the secondary solenoid. Clear? इसको एक बार फिर से देखें. ये हमारी दो सॉलिनॉइड्स हैं. सॉलिनॉइड का मतलब क्या होता है? कोई भी आप जैसे ये हमारे पास कोई कोर है, इसके ऊपर आपने कॉपर की वायर लपेट दी, तो जैसे 10 टर्न्स, 20 टर्न्स, 40 टर्न्स, उसके बाद में आपने इसमें से इसको जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल था, कोई भी बॉबिन्स या कोई आपका वुड है, वुड की कोई रॉड है, तो वो आपने बाहर निकाल दी. तो ये जो आपके सर्कुलर फॉर्म में जो कॉइल्ड टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स एक सीक्वेंस में जो है, इसको बोलते हैं हम सोलिनॉइड. नंबर ऑफ व्हेन ए कॉपर वायर इज रोटेटेड इज कॉइल्ड in a number of giving it a number of turns, it becomes a solenoid. तो हमारे पास ऐसे ये दो solenoid हैं, कौन सी? A और B. तो जो A solenoid है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के adjacent हैं, बीच में कुछ इस केस में air is the medium. अगर इसमें air medium नहीं है तो कुछ और हो सकता है, maybe iron, maybe some other thing. तो लेकिन यहाँ पे हमने ये माना है कि these are the two solenoids A and B having turns N1 and N2 when the core is of air. तो इसके अब क्या है, प्राइमरी कॉइल में जो है वो करंट I फ्लो हो रही है, उसके फ्लो होने से या चेंज होने से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होनी है वो कॉइल B में प्रोड्यूस होनी है. तो फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 I इंटू L. तो ये हम पहली कॉइल में जो चेंज आ रही है उसको ले रहे हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुई. अब इसके प्रोड्यूस होने के कारण ही दूसरी में जो है इंड्यूस करंट पैदा होनी है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यू एच ए. तो ये आपकी एच की वैल्यू है, इसको मान लें म्यू एच ए के हिसाब से इट विल म्यू नॉट N1 I इंटू A इंटू L फॉर द सिंगल टर्न. और अगर उसके सेकेंडरी में आपकी नंबर ऑफ टर्न जो N2 है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इट विल बी इक्वल टू दिस वन म्यू नॉट N1 N2 I इंटू A अपॉन L. चेंज आपकी A में हो रही है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण वो B में हो रहा है, और जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इस चेंज के कारण इन N2 नंबर ऑफ टर्न्स, वो हुआ आपका ये वाला कौन सा, म्यू नॉट N1 N2 इंटू I इंटू A इंटू L. तो हमें इससे पहले हम ड्राइव कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द
सेकेंडरी कॉयल जो होगा इट इज इक्वल टू एम इंटू आई, ये ड्राइव कर चुके हैं इससे पहले, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल सॉलिनॉइड। उस केस में इन दोनों को जब एक्यूट करेंगे एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n1 into n2 into a upon l. I will cancel out this I and this I will cancel out. So this is the mutual inductance of two solenoids which are adjacent to each other, where n1 is the number of turns in the primary solenoid, n2 is the number of turns in the secondary solenoid, and l is the length of the primary solenoid. जो number of turns है उसको length हम निकाल सकते हैं उस ढंग से, and a is the cross sectional area of the number of the coil or primary coil, primary solenoid, जो उसकी टर्न है उसका। ओके, तो ये जो वैल्यू आई आपकी म्यू नॉट हमने इसे लिया क्योंकि अगर हम यहाँ म्यू लेते हैं तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो हेयर द कोर इज ऑफ एयर ओनली, तो उस केस में म्यू आर इज इक्वल टू 1, सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, सो m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 इंटू a अपॉन l। और अगर आपकी जो कोर है वो एयर की ना हो के किसी और मटेरियल्स की है, देन m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l इंटू म्यू r1 a1 प्लस म्यू r2 a2 प्लस सो ऑन अप टू म्यू rn अपॉन an हेनरी। So this is all for today. Note your DHA. DHA 7 define Faraday's laws of electromagnetism also define Lenz's law, लेंज का नियम। What do you know about self induction and mutual induction? How they are different from each other? Drive an expression for the self inductance of a long solenoid having n turns and current I is flowing through it.
तो पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल्सो डिफाइन लेंजेस लॉ, ओनली 5 to 6 लाइन्स। और दूसरा है आपका व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों को डिफाइन करना है और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद आपने ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग N1 turns and current I is flowing through it and cross section area of this is A and length is L। तो एक ही पेज में आपने इसको करना है, अगर आपको जरूरत पड़े तो उसके बैक साइड पे भी कर लेना है। तो ये जो आपका ये काम है it should be confined to only a single page। So that's all for today।